Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में होने वाले कल जो एक एग्रीमेंट हुआ था, दैट वाज अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम एंड एग्रीमेंट, जो कि बायलैटरल एक एग्रीमेंट है ट्रेड के हवाले से, दैट इज लाइकली टू पेव द वे फॉर अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कॉमनली नोन एज द पीटीए, व्हिच कुड अल्टीमेटली लीड टू द एफटीए एज वेल। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। हम इसमें तीन मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड देखेंगे, बिकॉज दिस एग्रीमेंट इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट इट इंक्लूड्स बट इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस एग्रीमेंट हैज टेकन प्लेस। तो बैकग्राउंड की बात करेंगे। बिसाइड दैट हम देखेंगे इस एग्रीमेंट की डिटेल्स क्या हैं, व्हाट इज पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वुड बी दैट हाउ दिस हाउ दिस एग्रीमेंट is part of the broader trajectory of improvement in Pakistan Afghanistan relationship. ये change of जो nature of relationship है, जो significant improvement है, जो आज से exactly एक साल पहले देखना बड़ा मुश्किल था। तो why is this trajectory of improvement of relationship is taking place, to which this agreement is one of the major development. So before I go on to explain all of these developments on Pak-Afghan relationship, it is important कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जो हमारे पास करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का जो सेशन है, along with the political science new batch online session. Both of these courses are going to start by the end of the July, and you can get yourself registered for those courses on the given number. These courses will provide you different kind of support, not just in understanding these subjects, but also providing you the best possible material on these subjects, in addition to the evaluations as well as paper attempting techniques. So let's talk about this particular agreement. नाज़रीन, अगर मैं इस एग्रीमेंट का बैकग्राउंड बताऊं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में सिंस द अराइवल ऑफ द तहरीक तालिबान अफगान इनटू पावर इन अफगानिस्तान, पाक अफगान रिलेशनशिप जो हैं, दे हैव बीन अंडर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, स्ट्रेन्ड पार्टनरशिप। इनिशियल डेज और वीक्स में लग रहा था कि पाक अफगान रिलेशनशिप जो है वो बड़े इंप्रूव होंगे, बिकॉज अफगान तालिबान इज हेयर। और उससे पहले जो अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी और उससे पहले अहमद करज़ई साहब की जो गवर्नमेंट थी, दैट वाज लार्जली ब्लेम टू बी द प्रॉक्सी ऑफ इंडिया इन दिस रीजन। बट अफगान तालिबान का ना वाज कंसिडर्ड टू बी अ गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान अफगान रिलेशनशिप, बट ऐसा हुआ नहीं। सून आफ्टर दैट हमने रियलाइज किया पाकिस्तान ने दैट जो टीटीपी है अफगान तालिबान के जो टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान से जो हमले करती थी उसकी कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आई। और अफगान तालिबान जो थे, दे वर रिलक्टेंट or they were either unwilling or unable to act against them. As a result, Pakistan started putting pressure on Afghanistan, और एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिनेरियो बना। इस हद तक कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ दैट पाकिस्तान स्ट्रक दी टीटीपी हाइडआउट्स इन अफगानिस्तान एज वेल। और उस स्ट्रेन रिलेशनशिप में हमने देखा कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा। जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन लीडर्स के साथ। उसके साथ साथ हमने कहा पाकिस्तान की तरफ से अफगान रेफ्यूजीज को एक्सपेल करने की बातें हुई और एक्सपेल किया भी गया। तो एक काइंड ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिनेरियो बना। बट सिंस द अर्ली दिस ईयर, जब से देखा कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, इसहाक डार साहब, उनका विजिट हुआ अफगानिस्तान का। और उसके बाद फिर हमने दूसरी डेवलपमेंट देखी जब पाक अफगानिस्तान और चाइना की ट्राइलैटरल मीटिंग्स हुई ऑन ब्रॉडली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू दी सी पैक एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान। फिर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एक अपग्रेड करना हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बाय एस्टैब्लिशिंग एन एम्बेसी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्बेसडर इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का पाकिस्तान में एम्बेसडर अपॉइंट करना। तो दैट वाज द काइंड ऑफ डिफेक्टिव रिकग्निशन दैट पाकिस्तान गेव टू अफगानिस्तान। फिर उसके बाद जो मुल्ला अखुंजाद हैं, उनकी तरफ से फतवा आना अफगानिस्तान के जो लीडर हैं कि जो अफगानिस्तान की सॉइल से किसी भी मुल्क पे हमला करना और खासकर पाकिस्तान के अंदर हमला करना जो है, दैट इज़ अन इस्लामिक। तो वो जो फतवा था आया था, दैट वाज इनडायरेक्टली एन वेल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द टीटीपी। उसके बाद हमने देखा कि पाक अफगान रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट की जो ट्रेजेक्टरी है वो बढ़ना शुरू हुई। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक लास्ट एपिसोड में बात की थी अबाउट द पाक अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान जो ट्रेन के हवाले से, एक रेलवे के हवाले से जो एग्रीमेंट हुआ, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की वजह से। दैट एग्रीमेंट वाज आल्सो वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉट जस्ट इन बायलैटरल सेंस बट आल्सो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इट वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट जब अब एग्रीमेंट हुआ है, दैट एग्रीमेंट इज जिसको हम अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम कहते हैं। एंड दिस अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम जो है, इट वाज साइंड इन अफगानिस्तान बाय पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उनके साथ और अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान में जब एग्रीमेंट हुआ, दिस एग्रीमेंट इज येट अनदर डेवलपमेंट दैट एक्चुअली इज एन इंडिकेटर ऑफ gradual improvement of relationship, and not just improvement of relationship in security arena only, जो कि ट्रेडिशनल एरिया ऑफ कोलैबोरेशन रहा है, बट आल्सो इन इकोनॉमिक्स, ट्रेड, बिजनेसेस, और अब ये जो प्रोग्राम है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सेम ट्रेजेक्ट्री इन पाक अफगान रिलेशनशिप। अब नाज़रीन इस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट की डिटेल्स क्या हैं, व्हाट इज दिस एग्रीमेंट अबाउट। तो जैसा नाम से है नाज़रीन, इट्स एन अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, विच मीन दैट it is not a full-fledged agreement, rather it's a means to an end. And under this agreement, Pakistan और Afghanistan जो हैं, they have agreed to significantly reduce their tariffs on some agriculture products, and those agriculture products that are in fact 8 of them, और उनके जो अगर मैं बात करूं तो उनमें से जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान को, उसमें मैंगोज शामिल हैं, कीनूस शामिल हैं, बनानास शामिल हैं और पोटैटोज। अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान को, दैट इंक्लूड ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट्स, एप्पल्स एंड दी टोमेटोज। ये जो 4 मेजर अफगान एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान को, इनके ऊपर जो टैरिफ लाइन है वो 60% से कम करके इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 27%। नाजरीन ये जो एग्रीमेंट है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, जिसमें एक सिंबॉलिक है बट एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये जो रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स है ऑन लिमिटेड बट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ पाक अफगान इंटरेस्ट, इस पे टैरिफ कम करने से पाक अफगानिस्तान के दरमियान में ट्रेड वॉल्यूम विच ऑलरेडी टच अराउंड $1 billion दैट इज लाइकली टू इंक्रीज द नेक्स्ट ईयर। दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम इज फॉर 1 year, एंड इस 1 साल में इसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो भी ऐड किए जा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो इसकी टैरिफ रिडक्शन है उसको मजीद भी कम किया जा सकता है, और उस पर नेगोशिएशंस जो है वो हो जाएंगी। So this agreement will be implemented from 1st August, and it would be valid through the whole 1 year. Having said this thing, नाज़रीन, इस एग्रीमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है that this early harvest program is ultimately part of, and it will likely to lead to the next step, which is a preferential trade agreement. जो PTA है, preferential trade agreement है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, उसकी नेगोशिएशंस भी शुरू हो जाएंगी soon after the implementation of this phase, यानी अगस्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके बाद अगले स्टेप पे PTA का जो एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट करेंगे, और फिर वंस वी गो इनटू द PTA एग्रीमेंट, उसमें डेफिनेटली एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड जो है उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और विच कुड अल्टीमेटली लीड टू इन द कमिंग ईयर्स एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स इनटू अ फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नाज़रीन यहाँ ये बताना भी बड़ा जरूरी है कि ये एग्रीमेंट पाकिस्तान में अब हुआ है, बट इस पे नेगोशिएशन जो थी PTA की, दैट स्टार्टेड इन 2014 एंड इन प्रिंसिपल इट वाज एग्रीड टू, बट जब उस पे टॉक्स फर्दर डिटेल में गई तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एग्रीमेंट था, बट एक पॉइंट जो स्टिकिंग पॉइंट बना और जिसकी वजह से द होल जो नेगोशिएशंस एंड टॉक्स कोलैप्स, दैट वाज द इंसिस्टेंस एंड द स्टबन बिहेवियर ऑफ द देन अशरफ गनी's government, who demanded that if Pakistan wants to have a PTA with Afghanistan, then Afghanistan will be given access to India's market through Pakistan, obviously. So Pakistan was unwilling to go for this kind of a partnership with Afghanistan, because India does not do the same reciprocity to Pakistan. So Pakistan could not take a unilateral step that would strengthen India and give India greater leverage and greater influence over Pakistan. So Pakistan refused to allow Afghanistan a full access to India through Pakistan's road unless India does the same, and therefore Afghan government linked that transit agreement with the PTA, and therefore the talks collapsed. बट अब हमने देखा कि ये टॉक्स जो है वो दोबारा आना शुरू हुई, और अल्टीमेटली अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम जो है वो साइन भी हो गया। So this is not just the end of a journey, this could be the beginning of a journey that is likely to significantly improve the regional integration if taken alongside the railway projects की हमने बात की थी, CPEC एक्सटेंशन की बात की थी, बाकी प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए, अगर उनके साथ ब्रैकेट करके इसको देखा जाएगा, तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द ग्रेटर डिजायर and now implementation of regional economic integration that not just includes the other forms of integration, but also includes the trade integration
in this region that is not likely to have economic benefits but also the political benefits and the security benefits to this region. अब नाज़रीन इस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ये जो ब्रॉडर इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप है और जो रीजनल इंटीग्रेशन की जो डिबेट है, व्हाई इट इज हैपनिंग, what are the factors that are pushing or that are determining this improvement of relationship between Pakistan, Afghanistan and generally the region. नाज़रीन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें जो एक बड़ा फैक्टर है वो अफगानिस्तान के अंदर हमने कहा कि जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है, जिसका मैंने पहले कहा कि उससे पहले जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक अननेसेसरी एग्रीमेंट को, एक डिफरेंट ट्रांजिट ट्रेड के इशू को बायलैटरल ट्रेड के साथ एसोसिएट किया. That didn't make sense, but it was apparent at that time that Ashraf Ghani was doing that, his government was doing that mainly in order to please India, in order to get India's favors, and also it was part of the plan to not open up Pakistan's economic opportunities for Pakistan in Afghanistan and beyond Afghanistan. And therefore, Afghan government's stubborn attitude was responsible for the lack of integration in the region. Therefore, the अफगान तालिबान के पावर में आना और उनकी जो इकोनॉमिक पिवट है और उनका जो चेंजिंग स्टांस है इस दफा पिछले दौर के मुकाबले में, दैट सीम्स टू बी द वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से हम एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं. दूसरा बड़ा फैक्टर नाज़रीन जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता वो चाइना फैक्टर है. Obviously, China wants to integrate this region economically. We know that China has problems on its east. Therefore, the most peaceful region that China has is on the west. And China's जो broader BRI push है वो भी तकरीबन western side पे है. Therefore, पाक अफगान जो collaboration है वो चाइना की सक्सेस ऑफ द BRI उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, चाइना की सिक्योरिटी के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है, चाइना के CPEC के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. एंड देयरफॉर चाइना इज द फैक्टर दैट ग्लूज पाकिस्तान अफगान टुगेदर. And considering that Americans have abandoned Afghanistan, considering that Americans have fought 20 years war with the Taliban government, therefore, this current geopolitical and geoeconomic scenario is an ideal thing for China, which it wants to exploit, and therefore, it has been the major push factor behind Pak Afghan increasing collaboration और खासकर इकोनॉमी के अंदर और ट्रेड के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो collaboration है, that is significantly caused by the most important factor in fact is the China factor. Another reason why the improvement of relationship is seen is the ultimate, and at last long the Afghan government agreed to go for the Taliban, the TTP. Nazim, TTP has been the most important irritant in Pak-Afghan relationship in the last couple of years or so. और उस हवाले से अफगान तालिबान का जो चेंज ऑफ स्टैंस है फॉर ऑब्वियसली इकोनॉमिक रीजंस, because they knew that until unless they address the concerns of Pakistan security, Pakistan, even with the push from China, Pakistan would never go for any cordiality with Afghanistan's government. Therefore, उनकी तरफ से ये TTP के हवाले से स्टेटमेंट्स आना और ऑन ग्राउंड एक्शंस लेना, that was one of the most important factor that paved the way for the increasing economic integration and improvement of relationship. Another factor is the economic necessity felt both in Afghanistan and Pakistan. Obviously, जैसे मैंने पहले कहा कि अफगान तालिबान जो हैं उनकी जो पहली गवर्नमेंट थी 1990s के अंदर, one of the mistake that they made was that they did not economically strengthen their regime, and therefore they were largely isolated, they were weak, and they were just pushed away and withered away by the Northern Alliance in a matter of days. This time they want to consolidate their control, sustain their control on Afghanistan, and the best way to do that is to bring economic stability and economic development in Afghanistan. So this economic development, the desire to develop economic progress of the country and the people is at the heart of changing stance of Afghan government. Same can be said about Pakistan, because Pakistan is primarily now concerned with the economic issues, but at the same time, Nazim, we can't ignore the May factor. जब May के अंदर इंडिया पाकिस्तान की 4 days war हुई, और उस वॉर के बाद पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी नेसेसिटी अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. We can't afford to have a two-front conflict with Afghan Taliban as well as India. And therefore, Pakistan के economic factors, a security dilemma created by the Indian attacks in Pakistan, they both pushed Pakistan towards normality and cordiality with the Afghan Taliban government. So economic factors जो हैं वो glue करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, and both states know that their survival ultimately depends on the mutual collaboration on economic developments. Another factor is Pakistan's soft approach towards the refugees. हमने देखा कि जब टेररिज्म का इशू पीक पे था पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान used the refugees as leverage. But since Afghan started collaboration with Pakistan,
limited but important collaboration with Pakistan on counter-terrorism. Therefore, Pakistan has gone soft on the refugee issues. You don't watch, you don't see, or you don't hear much about the refugee problem in Pakistan anymore. Ministers statement नहीं देते, कोई statement इस तरह की नहीं आती, which is a clear indication that Pakistan has been soft on Afghan refugees, at least for now, and therefore that has changed the mind and the hearts of Afghanistan as well on improving collaboration with Pakistani state. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाजीन, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जो पुश है टूवर्ड्स recognition and establishing and engaging region and global community, especially through soft power, through the economic means. That desire is the heart of the decision of Afghan government to improve its relationship with Pakistan. Afghans know that if they want to reach globally, they have to first make peace locally, and therefore in region they have to conduct an economic diplomacy which would ultimately help pave the way for diplomatic engagements and diplomatic recognition of Afghan Taliban government regionally and globally. So therefore this agreement is likely to pave the way for ending regional isolation of Afghan Taliban government, and therefore it would help them ultimately engage the global community as well. So to conclude, हम कह सकते हैं that although this agreement is not significant in terms of volume of trade, but it is significant in terms of the context in which this agreement has taken place, and it is yet another step that Pakistan's Afghan relationship are improving, and it is yet another evidence of the fact that coercive and forced diplomacy on the part of Pakistan that was tried almost a year or so in 2024, that didn't work, and diplomacy and economic diplomacy is the most modern and the most effective tool of improving relationship and even solving the problems as complex as terrorism and the cross-border terrorism between Pakistan and Afghanistan. Something that India needs to learn the lesson as well. Thank you so much, Nazim, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.